Hello students, welcome back to the class. Today we are going to continue with the topic of reproduction and we will study about the asexual mode of reproduction in organism. As you all are very aware that in asexual mode of reproduction the most important concept is only one organism, or you can say one individual involves in the process of reproduction, means it gives rise to a new individual or new organism, and in the similar manner they have to be of the same species. So this is a basic concept that we all know regarding the asexual mode of reproduction. Carrying forward the concept of the DNA copying that we have discussed yesterday, what we know, DNA copying leads to an exact copy of DNA that has to be transferred to the next generation, and this exact copy of the DNA is also called as the replicated part of the DNA or replicated DNA, that is very much similar to that of the parent DNA. So as you can see in this particular diagram, if this particular strand of DNA is called as the parent DNA copy, then it produces an exact copy of the DNA after the DNA replication, and that is called as the daughter strand, and this daughter strand is a copy of the parent, and all the details of the parent DNA are exactly copied into the daughter DNA. So that is what happens in the DNA copying mechanism. All characteristics of a DNA they get transferred into the daughter DNA copy, and in asexual reproduction the copying mechanism is almost perfect, means there is no difference or there is no एम्बिग्विटी, मतलब उसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं आता जब एक पेरेंट डीएनए अपना कॉपी बनाता है. तो दैट इज द इम्पॉर्टेंस, दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हैविंग द asexual mode of reproduction in the organisms. Okay, let us now understand the importance, the resultant of this particular DNA copying. जब ऐसे कोई DNA कॉपी होता है और जब ऐसे organisms रिप्रोड्यूस करते हैं, जब सारे कैरेक्टरिस्टिक्स सेम हो, तो all individuals have the same or similar characteristics. So all the new individuals also have the same genetic makeup. Variations are not seen at all. किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं आएंगे तो variations तो होंगे ही नहीं, और अगर होते भी हैं तो it is very rare, ठीक है, and it is 1 in a million. So asexual reproduction किन में देखा जाता है? Normally we find that all the most of the microorganisms they show the asexual mode of reproduction. Here we are talking about the microbes like bacteria, amoeba, fungi. So these are the microbes which actually show the asexual mode of reproduction. Here we will not include viruses at all. Let us talk about the modes of asexual reproduction. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे about most common mode of asexual mode of reproduction, fission. Fission का मतलब होता है breaking, okay, और dividing. तो whenever कि कोई सेल जो होता है, अगर वो सेल टूट जाता है तो उसे बोलते हैं fission, right? Opposite of fission is fusion. तो अगर हम बात करते हैं एक अमीबा की, तो हम यहाँ लिखेंगे कि fission in amoeba. तो this is an amoeba cell. अमीबा इज़ अ सेल विच इज़ नॉट हैविंग एनी पर्टिकुलर शेप एंड साइज. तो अगर ये अमीबा का एक सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस है एट द सेंटर, बिकॉज न्यूक्लियस का होना ही सबसे इंपॉर्टेंट है सेल डिवीजन के लिए. न्यूक्लियस इलोंगेशन फर्स्ट ऑफ ऑल टेक प्लेस. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियस जो है ये अपना कंटेंट बढ़ा रहा है और ये इलोंगेट भी हो रहा है. तो यहाँ पर न्यूक्लियर कंटेंट इंक्रीजेस. न्यूक्लियर कंटेंट कैसे इंक्रीज होगा? बिकॉज ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. तो जब न्यूक्लियर कंटेंट एक सफिशिएंट अमाउंट में इंक्रीज हो जाता है ताकि ये इजीली दूसरे सेल में डिवाइड हो सके, देन न्यूक्लियर इलोंगेशन टेक प्लेस. सो न्यूक्लियस का लेंथ इंक्रीज होता है. इट इज़ अ वेरी स्मॉल डॉट, पहले एक डॉट जैसा था सेंटर पे, अब जाकर ये एक लेंथ वाइज इंक्रीज हो चुका है और इट इज़ नाउ about to divide. When the amoeba comes into the third stage, you will find the nucleus has now separated. Now two nuclei are formed. These two nuclei are now formed which are having equal genetic content. अब क्या है कि सेल
इसका जो साइटोप्लाज्म है वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जो सेल साइटोप्लाज्म था इसके अंदर अलॉन्ग विथ अदर सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है, ये सारे भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं इनटू दी टू सेल्स। नाउ वी विल फाइंड दैट द सेल स्टार्ट्स टू इनवैजिनेट, मतलब एट द सेंटर द सेल स्टार्ट्स टू कम टुगेदर। सेल के जो मेम्ब्रेन हैं नज़दीक आने लगते हैं और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेल इन्वेजिनेशन। This process is also called as cytokinesis. Nuclear division is called as karyokinesis. Karyon means nucleus, kinesis means division. इसी तरह से cyton means cell and kinesis means division. So karyokinesis पहले होता है, उसके बाद होता है cytokinesis, and in that manner you will find two new cells will form. और दोनों अमीबा सेल्स जो हैं ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे, बिकॉज यहाँ पर किसी भी तरह का वेरिएशन की बात नहीं करी हमने। दे आर कॉल्ड एज डॉटर अमीबे बिकॉज दे विल ऑल्सो फर्दर अंडरगो द प्रोसेस ऑफ गिविंग राइज टू टू सेल्स फ्रॉम वन पेरेंट सेल। दिस इज द पेरेंट सेल and these two are daughter cells. So this process in which a single parent cell give rise to only two daughter cells is called as binary fission. I hope all of you know about Plasmodium, malarial parasite. ये Plasmodium जो है, it is a single cell. When it starts to divide, it has a nucleus, creates a kind of shell around itself. इसको बोलते हैं cyst. Means gradually the membrane it disappears. The membrane which is formed around it, it starts to disappear. Its nucleus it starts to divide. So here you will find number of nuclear divisions will take place. So all of them are not the cells, but they all are the nuclei. Okay, now they are called as karyokinesis taking place. और कहाँ पर हो रहा है? This is taking place within a shell and that is called as a cyst. ठीक है, and this takes place under the unfavorable condition. जब भी इसको डिवाइड होना होता है तो एक तरह से ये कई सारे न्यूक्लियाई बना लेता है। उसके बाद जब न्यूक्लियाई बन जाते हैं, then the self wall formation or cell membrane formation take place around each of these nuclei. ठीक है, अब इसके चारों तरफ सेल बनता है। जब सेल का शेप आ जाता है, बन जाता है, then what happens? This cyst break open और ये सारे सेल्स बाहर की तरफ निकल जाते हैं from the cyst. They will spread to different parts of the body और वहाँ पर भी वो जाके अपने को मल्टीप्लाई करेंगे। एंड जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने सेल्स बन रहे हैं, यहाँ पे कोई हिसाब किताब नहीं है। यहाँ पर जैसे कि अमीबा में सिर्फ 2 सेल्स बने थे तो दैट वाज कॉल्ड एज ए बाइनरी फिशन, बट यहाँ पर कोई भी लिमिटेशन नहीं है। सो द नंबर ऑफ सेल्स आर न्यूमरस एंड दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड एज मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन में नंबर ऑफ सेल्स आर फॉर्म्ड from a single parent cell and they don't have any particular or fixed number, so that is called as the multiple fission, right? So I hope that you have understood about the fission process in the amoeba, in the plasmodium. Both these are very important because normally the differences come in between them, ki differentiate between binary fission and the multiple fission, and how does multiple fission is a special kind of division because multiple fission तभी होता है क्यों जब इसके conditions favorable नहीं होते. So that's all students. In this video we have discussed about the fission in amoeba and in Plasmodium vivax. In my next video I will talk about budding, fragmentation and regeneration. I hope that you have liked the content, and if you have done so and if you haven't subscribed the channel yet, please subscribe to the channel, and thanks for watching this video till this point.